Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths। मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेई PYQ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। हियर वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 27 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। सो हियर इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन 2e टू द पावर x प्लस 3e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 4e टू द पावर x प्लस 7e टू द पावर माइनस x dx इक्वल टू व्हाट 1/14 u ऑफ ux प्लस v log 4e टू द पावर x प्लस 7e टू द माइनस x डी प्लस सी। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? u और v की वैल्यू फाइंड करना है, देन सम ऑफ द वैल्यू ऑफ u एंड v का रिजल्ट। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई जस्ट अज्यूम दैट कि ये आई इंटीग्रेशन क्या है, 2e टू द पावर x प्लस 3e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई क्या है हमारा 4e टू द पावर x प्लस 7e टू द पावर माइनस x dx। ये हमारा इंटीग्रेशन है। टू इंटीग्रेट दिस न्यूमरेटर वाला पार्ट जो है 2e टू द पावर x प्लस 3e टू द पावर माइनस x, right? I just write this as a and derivative of the denominator function, that is what 4e to the power x plus 7e to the power minus x plus b into the denominator function. So denominator function is 4e to the power x plus 7e to the power minus x. So मैं जब डिफ्रेंशिएट करूँगा ऐसे तो ये क्या हो जाएगा 4e to the power x and 7e to the minus x का हो जाएगा minus 7e to the minus x, right? And plus b 4e to the power x plus 7e to the power minus x. Now just I write this way 4a multiply कर देना 4a plus 4b 4a plus 4b into what a to the power x, and this one is what plus minus 7a and plus 7b, and this is what e to the power minus x, and this result is equal to 2e to the power x plus 3e to the power minus x. Now I will compare both sides and equate the coefficient of e to the power x and e to the minus x to from both side. So यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4a प्लस 4b क्या है हमारा 4a प्लस 4b का रिजल्ट जो है दैट इज इक्वल टू 2. So I write here the 4a plus 4b 4a plus 4b equal to what 2. So I can write this as a plus b equal to 1 by 2. So one of the equation in a and b क्या आ गया 1 by 2, right? So I just write this as first. ओके दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा -7a प्लस 7b -7a प्लस 7b एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 3. ये हमारा क्या है 3 के इक्वल है. सो फ्रॉम हियर -a प्लस b का रिजल्ट क्या हो गया 3/7. सो दिस इज द इक्वेशन 2. नाउ आई विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन सिंपली adding this two equation. So minus a and plus a cancel, right? My a plus b is what 1 by 2 and minus a plus b is 3/7. So when we add this, so this is cancelled, 2b equal to what 1 by 2 plus 3/7, right? This is what equal to 3/7. Okay, so this is what here plus 3/7. Okay, plus 3/7. So now what I can do here is just I will take the LCM. So this is 14, this is 7 plus 6, this is 2b. Okay, so we get b equal to what 13/28. 13/28 b का वैल्यू आ गया हमारा 13/28. So putting this value of b in first, right? b equal to 13/28 in first. So what do we get? यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा, दैट इज 1/2 माइनस 13/28 बेसिकली. ओके, सो 28 इज व्हाट एलसीएम. सो यहाँ पे होगा 14 माइनस 13, राइट? सो दिस इज व्हाट 1/28. सो a का वैल्यू आ गया 1/28. सो देयरफॉर द न्यूमरेटर पार्ट जो है वो हमारा क्या इंटीग्रेशन में हो जाएगा. हमने क्या लिखा है a, दैट इज व्हाट a की वैल्यू क्या है 1/28. सो आई विल राइट हियर 1/28. Okay, and what is that derivative of this function is 4e to the power x and plus minus 7e to the power, what I can write here 4e to the power x minus 7e to the power minus x plus b. So b is what basically b is 13/28. So I write here the 13/28. Okay, and b this is the value of b, and what is that 4e to the power x and plus 7e to the power minus x, and this whole divided by 4e to the power x plus 7e to the power minus x, right, equal to dx. For numerator part just we simplified this way. Okay,
So now what I will do here is I will just separate this. Okay, जब मैं इसको इसके साथ separate करूँगा, so this is what 1/28 and integration of 4 e to the power x minus 7 e to the power minus x divided by 4 e to the power x plus 7 e to the power minus x dx. एंड ये वाला क्या हो जाएगा 13/28 एंड इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये 4 e to the power x प्लस 7 e to the power माइनस x, राइट, डिवाइडेड बाई ये हो गया 4 e to the power x प्लस 7 e to the power माइनस x dx. सो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन जो होता है वो हम, सो व्हाट वी हैव हियर इज यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है दैट इज एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इज व्हाट बेसिकली integration of this one is log fx, right, plus c. So this we will apply here in the first part, this part, right. 4 e to the power x plus 7 e to the power minus x को differentiate करने पे ये वाला result आएगा 4 e to the power x minus 7 e to the power minus x. So I can write this as 1/28 and log what 4 e to the power x plus 7 e to the power minus x, right, plus what 13/28 and this is what dx integration is x, right, plus what c, plus c. So we get the integration I, the result is what basically, so what I can write here is, so I can write this as I equal to I integration equal to I can just take there 1/14 common, right, 1/14 common. So we can write this as 1/2 log 1/2 log 4 e to the power x, 4 e to the power x plus 7 e to the power minus x, right, and plus 13 by what 13 by 2, 13 by 2, right, 13 by 2 and what x, 13 by 2 x plus c, okay, 13 by 2 plus x plus c. Okay, compare this result. If we compare this result with the question given here is what 1/14 in bracket u of x plus v log base e 4 e to the power x plus 7 e to the power minus x plus c. So we need to find just u and v. So just comparing the coefficient of x here, coefficient of x अगर मैं देखूँ तो coefficient of x is that is 13/2. So we get u equal to what 13/2 and v, what is v? V is what? V is 1/2. V is our 1/2 and we need to find what u plus v. So 13/2 plus 1/2. So this is what 14/2. Okay, 14/2. So we get here the 7, right. So answer for this question is 7, right. Hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Thank you for watching. Bye bye. Take care.